Uh, Hello, good evening, all of you. Good afternoon, all of you. I hope I am audible to all of you. Uh, okay, so I won't take a lot of time of yours, or we are not here to meditate or do something like that. Uh, it's just basically a few things before going there tomorrow. Uh, Before you enter the exam hall, few things which from just telling from my own experience, from my past to own experience, I will be telling you. Uh, First of all, just I don't think that today you need to read a lot or you need to take a lot of pressure on you. Like many people do that, but I don't find it relevant as such. बट थोड़ा सा यही कर लेना कि जो भी पढ़ा है, अगर आज जैसे कुछ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री या पॉलिटी का कुछ पढ़ सकते हो, थोड़ा सा वो ज़्यादा मतलब एक कॉन्फिडेंस देता है। यू कैन जस्ट गो थ्रू दैट। बाकी चीज़ें तो ज़्यादा ऐसे भी मतलब आर्ट एंड कल्चर या कुछ चीज़ें आज इतना ज़्यादा उसका रिलेवेंस होता भी नहीं है। अगर आपने कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, ओके, आपने अगर कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, यू कैन गो थ्रू दोज शॉर्ट नोट्स। दैट इज़ वन थिंग। दूसरा आई वुड से कि you need to just make sure that what all things you are going to carry tomorrow. Your admit card, that is you need to take the printout, okay, admit card ले लेना, then photos ले लेना. I think sometimes they ask for photos at some center. Definitely carry the mask, okay, mask carry कर लेना. Then वो I think we use the black pen, right? So you carry that black pen, 2 3 black pens you carry. आई व्हाट, लाइक वो एक होता है ना, वो क्या होता है, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द प्लेन पेन, वो जो पॉइंट, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द पेन, वो जिसका थोड़ा सा ज़्यादा फटाफट गोल होता है। आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट पेन। सो यू कैरी दैट पेन। देन जो भी अदर थिंग्स है, मेक श्योर दैट यू कैरी ऑल दोज थिंग्स. Sometimes they Rorito, yeah, I think Rorito flow, ballpoint or something. Yeah, sometimes they do allow water bottles or they do not allow. Just make sure that you carry something. Few things which I would like to mention, which I committed mistakes, is that you know, like the on the question on the answer sheet, or you need to fill up the uh, your roll number correctly, and the roll that the number of the question paper, you make sure that you do the fill that correctly, okay. So at least your roll number, because sometimes you know we are in such a hurry that you make mistakes in that, and unnecessarily that will burden your mind, okay. You don't commit a mistake in that. So all the formalities, I would say, don't commit any mistake in that, okay. क्योंकि क्या होता है कि अननेसेसरी आपको लगता है कि मैंने तो यही गलत कर दिया, तो बाकी तो क्या ही फायदा है। ओके, तो ये वाली चीजें ये करना। तो मेक श्योर दैट यू फिल ऑल द डिटेल्स करेक्टली, ये वाली बहुत जरूरी है। आई वुडेंट सजेस्ट टू कैरी एनर्जी ड्रिंक एज सच, क्योंकि इतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होता है। रादर देन यू शुड हैव समथिंग गुड ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, मे बी फ्रूट्स और समथिंग, बिकॉज दैट इज ऑलवेज हेल्पफुल। डोंट गो एम्प्टी स्टमक. I would say don't go empty stomach. Yes, definitely have something. You have some fruits or something like that. Don't eat anything heavy. Paper must be 9:30 to 11:30, and after that it must be 2 to 4, something like that, or 2:30 to 4:30. So this must be the timing. Okay. So what is the timing of the tomorrow's paper? The first paper I know, 9:30 to 11:30. I think that is the regular time, and after that must be 2:30 to 4:30 only. Yeah, 2:30. Okay. So I would say कि इतना ज़्यादा नहीं, and in afternoon also you eat something. You eat something, if possible. Like if any of your friend or if any of your parent can accompany you, वो हो सकता है तो हो सकता है, इतना तो जरूरी है नहीं। ओके, सो वो देख लेना। एंड आई वुड से जो बिटवीन का गैप होता है ना, दो पेपर के बीच का जो गैप होता है, व्हाट आई यूज टू डू, आई यूज टू कैरी अ पेपर ऑफ सी सैट। ठीक है, सो आई यूज टू रीड द पैसेजेस। मतलब 11:30 बजे पेपर खत्म हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट चेक द आंसर की, ओके, क्योंकि बहुत सारे लोग आंसर ढूंढने लगते हैं। क्योंकि एक आपका पेपर हो गया, उसके बाद तो आपका कुछ भी नहीं होने वाला है।
एंड बहुत लोगों को लगता है कि मेरे तो बहुत कम मार्क्स आएंगे या मैंने तो बहुत क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट किए हैं, बट तो आई वुड से कि मतलब you don't know, right? Many people are giving exam with you, many people are giving exam with you, you don't know how other people are performing, you don't know that. So you just don't care about that कि मेरा पेपर बहुत खराब गया है, मेरे को मतलब आई विल स्कोर ओनली 80-90 मार्क्स और मैंने सिर्फ 40 60 70 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं. यू डोंट नो हाउ मेनी क्वेश्चंस अदर पीपल हैव अटेम्प्टेड. Or even if you discuss about the people around you, you are taking a very small sample, you are taking a very small sample. There are around 3 to 4 lakh people appearing in these prelims, and out of that only 30 to 14,000 will people clear for mains. So you don't know basically कि बाकी लोगों का पेपर कैसे गया है. Because this is my feeling in my first attempt. In my first attempt after coming of the exam hall, I called my parents, I called my father, and I told him that I am not going to clear this prelims. But that was not the case. I cleared with 10 marks margin. बिकॉज यू डोंट नो कि आपने जितने क्वेश्चन किए हैं वो क्वेश्चन सही है या गलत है. आपने जितने क्वेश्चन किए हैं वो सही है गलत है, यू डोंट नो दैट. ओके. तो मैं यही कहूंगा कि आप आपको खुद को पेपर लाइक इन ड्यूरिंग पेपर ऑल्सो यू डोंट जज योर सेल्फ, यू डोंट जज योर सेल्फ. बिकॉज वॉट मेनी a times what happened is initial 20-30 questions, like there are four sets, right? A B C D. तो क्या होता है कभी कभी कि इनिशियल 20-30 क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट हो सकते हैं, but that does not mean the entire 100 questions are difficult. Unless you solve the entire paper, don't judge the paper. तो आपको ऐसा हो सकता है कि पहले 30 क्वेश्चन में से 5-6 आए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बाकी वाले 70 जो उसमें से 50-60 अच्छे से आए. It can happen, right? You don't know that. So you don't judge the paper. You don't judge the paper unless you solve the entire paper. That is my analysis of it. That if you judge the paper, then you will be very anxious, you'll be very anxious, you'll be worrying, then you'll there is a high chance that you can commit mistake. Because that's what happened when I gave my first attempt. मेरे पहले अटेम्प्ट में मेरे को लाइक ऐसा हो रहा था कि दो क्वेश्चंस के आंसर सही आए थे लेकिन मैंने गलत मार्क कर दिए थे. So that happened. So my suggestion would be keep yourself calm, and panicking is again a fact. Because you have studied this for a year and you are appearing this, so definitely you will feel something. आपको अगर क्वेश्चन नहीं आएगा तो लेकिन don't take anything on your ego. Just go and just appear. Okay, जितने क्वेश्चंस आते हैं अच्छे से मार्क करिए. We like you guys have studied enough. Let me tell you honestly, those who have studied sincerely since last 7, 8, 9, 10 months, whatever it is, you guys have studied enough. You are like, if you think that if you have studied enough, then definitely you are eligible and you should go and appear in the exam. Okay. तो पहले तो ये है, carry all the things which are required, fill all the details correctly. Don't hurry. Okay, don't hurry at all. Don't hurry at all. Okay. कोई भी चीज़ के लिए हरी करने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट सी, जस्ट गो, एंड देन आफ्टर दैट आई वुड से कि जब भी आपको पेपर मिलेगा, ओके, डोंट जज द पेपर. टेक वन क्वेश्चन एट अ टाइम, यू सॉल्व दैट क्वेश्चन. ओके. वही जो हमने राउंड से देखा, वी विल सॉल्व बाय राउंड्स. पहले आप जितने भी कॉन्फिडेंट हो उतने वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लेना. देन आफ्टर दैट वन मोर थिंग, डोंट कीप दैट कि एट द एंड में सारे क्वेश्चंस की जो आंसर पेपर में मार्क करना होता है. माई स्ट्रेटेजी वॉज कि एक पेज पे 4 क्वेश्चन रहते थे, 4 क्वेश्चन करके मैं आई यूज टू मार्क ऑन दैट जो OMR का शीट होता है. यू कैन डू दैट फॉर 10 क्वेश्चन ऑल्सो, बट डोंट कीप इट एट द एंड दैट कि मैं 100 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा उसके बाद मैं सारे क्वेश्चन मार्क करूंगा. ओके. सो डोंट डू दैट एट ऑल. ओके. सो 5-10 जितना भी आपका लिमिट है, 5-10 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मेक श्योर दैट यू मार्क दैट ऑन OMR शीट. ओके. डोंट कमिट दिस मिस्टेक. देन आफ्टर दैट आई वुड से कि जैसे कट ऑफ जा रहा है 87 88 या बिलो 100 है, लाइक 2016 कट ऑफ वाज 116, 2017 कट ऑफ वाज 105, 2018 कट ऑफ वाज 98, 2019 कट ऑफ वाज 98 or 100 something, 2020 कट ऑफ वाज अगेन 92, 2021 कट ऑफ इज 87. Okay, so considering this, I would suggest to take much of the risk. मतलब जिसमें आपको कुछ भी नहीं पता है, डोंट गो टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन. आपको जिसमें कुछ भी नहीं पता है, यू डोंट हैव एनी क्लू इन दैट रिगार्ड, डोंट गो एंड अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन.
जिसमें आपको लगता है कि आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट करे हैं, बिकॉज़ इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल टू नो ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है? कि आपको ऐसा भी नहीं हो सकता कि आपको सब कुछ पता है। मतलब जितने सारे क्वेश्चन्स हैं जिसमें आपको पता है, if you know there will be some 40, 40, 50 questions where you must be confident with the answer, there you go forward, you attempt that question. Where you have eliminated 2 options, okay, वहाँ पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो सकते हैं। माय सजेशन एज ऑलवेज, कीप इट बिटवीन 80 to 90, 80 to 90. Where you don't know anything at all, don't go and attempt that question. Where you don't know anything at all, don't go and attempt that question. That will be my suggestion. ओके, वो वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट योर जीएस पेपर। ओके, जीएस पेपर में थोड़ा मतलब वही एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है। मेक श्योर दैट यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स, फोकस 100% इन द एग्जाम ओनली। ओके, जितना भी हो सके टोटल 100% अगर करेंगे तो टाइम मैनेजमेंट कर लेना अच्छे से, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर लेना। ओके, एंड जस्ट डोंट वरी इतना ज़्यादा, ये मतलब पेपर में जाने के बाद भी मतलब मैं पास नहीं होऊंगा, मेरा क्या होगा, मुझे फिर से पढ़ाई करनी पड़ेगी, डोंट थिंक एट ऑल अबाउट ऑल दिस। जस्ट बी इन दैट टाइम, बी इन दैट मोमेंट। जितना भी अच्छा आ रहा है आप अच्छे से अटेम्प्ट कर देना, ठीक है? तो जितना हमने राउंड्स की बात करी है, पहला वाला राउंड तो टाइम लगता है उसमें, लाइक 1-1.5 आवर लगता है। जितना भी हो सके फर्स्ट राउंड में हम 40-50 जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उतने क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। ओके, so after the, like, this is for GS paper. In between the paper, I would say what I used to do. 1 hour, I used to take the break. 11:30 to 12:30, I used to take the break. I used to have whatever I like lunch. Okay, fruits, or I used to eat something. I used to eat, definitely eat something, because ultimately you are exhausted, right? You're exhausted. इतना दिन से आप पढ़ाई कर रहे होते हो, definitely you are exhausted. Okay, trust me, you should eat something. You should you should drink some juice, something. Okay, तो ये वाला चीज करके देन आफ्टर दैट आई यूज टू रीड द सी सेट का पेपर, मतलब एनी पेपर, लाइक एनी पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, और एनी मतलब कोई टेस्ट सीरीज का पेपर लेके व्हाट आई यूज टू डू, आई यूज टू रीड द पैसेजेस, आई यूज टू रीड द पैसेजेस। So when I used to read the passages, then that used to set up the moment. So my brain was like that, this is the strategy which is I used to do in both my attempts. So I kept myself engaged. Okay, so my passages padhta tha, and I never used to answer those questions. I just used to read the passages. Questions padho, passages padho. I did not answer the questions, just my passages, so that it used to set me in the motion. Okay, it used to set me in the motion. ठीक है, सो थोड़ा सा सी सेट का ये पढ़ के देन यू गो फॉर द सी सेट का पेपर, यू गो फॉर द सी सेट का पेपर। अगेन सी सेट के पेपर में आई वुड सजेस्ट नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग एल्स। जितने आते हैं बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। माई स्ट्रेटेजी वॉज आई यूज टू गो फॉर द लाइक those questions later, uh, passages questions later. I used to solve these other questions first, then after that I used to solve the passages later. Okay, so you do that, you solve properly, but make sure that you don't get panicked even if you are not getting answers, because you don't know how other people are solving it. You don't know it, right? So just be, make sure that इतना ज़्यादा भी panic होने की ज़रूरत नहीं है। Go solve the questions, try to see solve most of the questions in CSAT. CSAT में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, लेकिन don't take the risk in passages. So when I am saying that solve more maximum question, that means that जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, try to solve those questions maximum. Passages may, yes, definitely, when you are not sure, don't solve that. Even the like passages and comprehension, include reading comprehension, is for 31 questions. So out of 31, even if you solve 20-25 questions, it is okay. 20 questions, but try to solve uh no, you don't do Shvankar, you don't do guesswork in CSAT. Please don't do guesswork in CSAT. CSAT में guesswork नहीं चलता है वहां पे। You should not guess at all. Unless you get the right answer, you don't guess at all, because वहाँ पे नेगेटिव मार्क्स बहुत ज़्यादा है, बिकॉज द क्वेश्चन इज ऑफ 2.5 मार्क्स, 2.5 मार्क्स। ओके, वहाँ पे नेगेटिव मार्क लाइक आई थिंक 0.89 कुछ नेगेटिव आता है। सो वहाँ पे नेगेटिव मार्क्स बहुत जा सकते हैं। सो आई वुड से डोंट गेस इन सी सैट,
unless you get the right answer, don't attempt that question. Okay. So try to solve 50 questions in CSAT, like 45 to 50 क्वेश्चंस इन सीट है उस जितना ज्यादा हो सकता है उतना अच्छा है. 0.83. Yeah, thank you. 0.83 in CSAT. So if you solve a negative question, that means 0.83. So I won't suggest you to take any random guess in CSAT. Okay. तो सीसैट में बहुत अच्छे से मतलब ये करना न्यूमेरिकल्स. अगर आप 50 न्यूमेरिकल देखते हैं ना, 50 में से आपको 25 to 30 एनी वे यू विल गेट द आंसर. एंड वो 30 में से आपके 28 क्वेश्चन राइट होंगे. If you solve the 30 questions which are numericals, definitely out of 30 you will get 28 questions right. And if you solve 20 questions in your passages, you will get some 15 question, or even if you get 10 questions right, then also you will clear CSAT. Then also you will clear CSAT. Okay. So this is all about the exam. So today you keep calm. Okay, you don't worry about a lot of things. Okay. अच्छा ही आएगा पेपर. जो भी आएगा सभी के लिए सेम आएगा, आपके लिए भी आएगा, सभी के लिए सेम आएगा. सो डोंट वरी अ लॉट अबाउट सीसैट. ओके. सो जस्ट बी काम. आज ज़्यादा टेंशन, कुछ टारगेट मत रखना, क्योंकि अगर आप टारगेट रखेंगे तो आपको एट द एंड ऑफ द डे लगेगा कि जितना मैंने टारगेट रखा था आई कुड नॉट कंप्लीट इट. सो डोंट कीप योर सेल्फ इन टारगेट फॉर टुडे. Okay. So no target for today. Just go, read whatever you can read, have dinner properly today, go and sleep properly. Go and sleep properly. नींद नहीं आती है. नींद नहीं आती है कि आज भी नींद आना डिफिकल्ट है. I know sleeping today is difficult, but definitely have some sleep for 5-6 hours. Okay, have some sleep for 5-6 hours. Definitely it is a difficult day, लेकिन don't make this is which is very very like beyond life or something which is more than life. There is nothing like that. Yes, definitely you gave your maximum time for this and you deserve better. That is what I expect from all of you. बस जितना आपने टाइम दिया है, बस मेक श्योर दैट कि उसको अच्छे से यूज करना है. डोंट डू एनीथिंग राइट नाउ. ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. कुछ इतना ज़्यादा मेडिटेशन या कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. आपने पढ़ रखा है, इतना ज़्यादा भी मतलब लोड लेंगे तो कैसा होगा, राइट? तो बढ़िया तरीके से जाना है पेपर में, ज़्यादा ज़्यादा लोड नहीं लेना है. जो लोग अच्छे से पढ़ाई करें उन लोग का होगा ही होगा. ओके. तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम माई साइड. Okay, throughout the year we focused on most of the things, and yes, definitely prelims होने के बाद then for mains also we will start studying together. Okay, all the best to all of you from my side. Just do better. Okay, just I think take ashirwad from your parents and just go there and appear for the exam. You need not be fearful about anything. जो आएगा वो आएगा. हम तो पेपर पेपर चेंज नहीं कर सकते, राइट? तो जो आएगा वो आएगा, देखा जाएगा. तो वैसा ही है, वही अप्रोच से जाना है. बस यही है कि जितना किया है वो अच्छे तरीके से वहां पे करना है. मतलब जितना आपने सॉल्व किया है वहां पे अच्छे तरीके से देना है. ठीक है. इतना ज्यादा ये नहीं करना है कि मतलब ज्यादा मतलब इन द हरी यू विल मिस मेनी क्वेश्चंस. डोंट डू दैट. You have studied very good, you go and appear properly. That is what you need to do. Okay. So all the best from my side. Okay, all the best to all of you. Okay. उसके बाद then we will see day after tomorrow उसका analysis भी कर लेंगे. Okay, all the best to all of you.